अच्छा, तो उसकी बारी अभी। you cannot explain that once again. Yeah, I can, but exactly. मैम मैंने एक बार किया मैम। तो चलो वैसे प्रणवी बात तो उसकी वैलिडेटेड है, तो माँ let's start, right? Hi Siddharth. Am I audible now? You're audible, but your voice is pretty low, but it's okay. देखो, we have started with ray optics as of now, and हमने क्या किया है, हमने ना total internal reflection का concept अभी finish किया है lately. Okay, so Pranavi is going to explain you. It is going to give you a brief. I'm bad at explaining things, mom. Oh, don't you want to be a teacher someday? Oh, okay, what do you want to be exactly? I haven't decided. Oh my goodness. You know, एक chronology और बताती हूँ. Lately I have met a few science people and they told me that science वो लोग लेते हैं जिनको पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है. तो ये ना बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगी, तो मुझे ये वाली बात मत बोलना दोबारा कि मुझे पता नहीं है. ठीक है? If the concepts are clear, you can Yes, explain mom. it really well. Concept is ठीक है? Not everyone can be a good teacher, but ये बात थोड़ी सी अजीब है. ये ऐसी वाली स्टेटमेंट हो गई कि I can read English but I don't know how to speak English. mom, a bit like that only, mom. The problem is like that only. Okay, okay. Mom, could you do it for this time, please? No, you are going to be the teacher for the day. Not for the day, for a particular topic. Okay, for a general discussion, Siddharth, where are you from? I'm from Chennai, ma'am. Oh, okay. And you were having regular schools as of now? We are having online classes regularly and our exams are going on. Okay, okay. And Abdul, how about you? You can also turn on your camera if I'm audible to you. Okay. Okay, Pranavi, please, I'm giving you the whiteboard, please. Mom, Upasana, please, can mom. you make me the host, or can you please allow me to share the screen? Yes, ma'am. Sure. Mom, I don't have the mouse with me. Really, mom? नित्या, आप ही समझाओ. एक लाइन में? नहीं, proper concept. Proper concept. Okay, ma'am. Pranavi, if you don't recognize wherever Nitya is wrong, you are gone today. Okay, mom. Okay, you may start, please. जल्दी जल्दी समझा दो, फिर हम next concept शुरू कर देंगे अभी. हाँ मैम. So एक second. Siddharth, you can please interrupt in between whenever you think there's any query, okay? Okay. Okay, so we already know the phenomena of refraction. क्या यार? ये बता दो TIR क्या होता है पहले. मुझे तो TIR is the total internal reflection of is basically total internal reflection. Okay. It happens when the angle of incidence becomes greater than the angle than the critical angle, where critical angle and the light ray which is incident on the surface. Which is incident on the surface gets reflected back instead of refracting. आपको खुद को समझ में आया आपने क्या बोला? हाँ मैम. आपने 3-4 स्टेटमेंट्स मिक्स कर दिया, आपको पता चला? हाँ मैम. हाँ, तो आपने गलत बोला ना. प्रणवी, कहाँ हो आप? I thought you were going to correct Nitya. Yes, mom. अच्छा, what is critical angle, Nitya? Pranavi, आप बताओ. Critical angle. नहीं, Nitya, you draw the diagram. Pranavi, you tell what is critical angle. When the incident ray passes from the denser medium to the rarer medium in a XYZ angle. Okay. To the पेपर में ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे? ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे, टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा. Ma'am, yeah, normal 90 degree. Siddharth, do you know what is critical angle? I'm bad at explaining. I don't know. Don't give me this excuse. Huh? This excuse is already taken off by Pranavi, and this excuse is not going to be used again in my class at least. Okay? If you don't know the concept straight away, ma'am, I don't know this concept. Please explain. Fine? Yes. Okay.
Critical angle, ma'am, it is the incident It is the angle of incidence angle, at which the light reflected ray is. is 90 degree. Yes. Critical angle is that angle at which the refracted ray is at the angle of 90 degree to the normal. Fine. ठीक है? ये जो रेड रे बनाई है नित्या ने, this ray, this is the 90 degree ray, okay? And this angle is the angle of, this is the critical angle. It can be written as angle C or it can also be written as theta C. ठीक है? Now, in case when the angle of this theta C, or if we say that if in any case the angle of incidence is greater than the critical angle, like in this case, right? In this case, the ray of light will be reflected back in the same medium, and this case is known as total internal reflection. Okay? देखो हमने इतनी बात तो सुनी है कि जब भी कोई हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? हमें ये बात तो पता है ना सिद्धार्थ? पता है ना हमें? Yes, ma'am. ओके, जब भी हम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ना कि रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हैपेंस फ्रॉम अ शाइनी सरफेस, जस्ट लाइक अ केस ऑफ मिरर. ठीक है? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, तो दैट इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर? ठीक है? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके नोट्स विल बी गिवन टू यू एंड विल बी वी विल आई मीन इफ इन केस यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, हम आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है? नित्य, इसकी एक एप्लीकेशन बताओ मुझे टीआईआर की फटाफट. टीआईआर की एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड प्रिज्म पेरिस्कोप, भाई फिर मिराज. एक मिनट प्रणवी, आप बताना जरा एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर. मीनिंग उसकी कंडीशंस मैम. प्रणवी, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करते हो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाँ, यूजेस मैम ऑप्टिकल फाइबर. ओके, देन डायमंड पे वो होता है. डायमंड पे होता है. क्या होता है डायमंड पे प्रणवी? ऐसे ऐसे करके कुछ तो होता है डायमंड पे. क्या होता है? इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मुझे लगता है नित्या की सीट में आज कुछ हो गया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब से कांस्टेंट मोशन में है. नहीं मैम, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रही आज चेयर, इसीलिए मैम. आज चेयर की आवाज भी नहीं आ रही है ना सिद्धार्थ? एक सेकंड मैम. है ना सिद्धार्थ? look you have a new friend today and आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या सोच रहा होगा सिद्धार्थ आपके बारे में? nothing, you're thinking nothing. कुछ तो सोच लो. हाँ? No judging. No judgments. Okay. I judge people very early, very quickly. मैं तो बंदे को ऐसे करके जज कर लेती हूँ. सेम है मैम. सेम है. नित्य, आप रहने दो. ओके, नेक्स्ट हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था which was refraction of light. ठीक है? Spherical refracting surfaces. Number 1 कौन सा था उसमें? Which was the number 1 case? Concave SRS. Concave spherical refracting surface, and number 2 was convex spherical refracting surface, right? अच्छा, इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ कुछ टर्म्स फाइंड आउट करके रखिए. सिद्धार्थ, ये टॉपिक ना बिल्कुल न्यू है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, और ये थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है एंड बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जो इसके जो पिछले हमने टॉपिक्स करे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. सिंपल रिफ्रैक्शन है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. Okay. ठीक है? अच्छा, मैं एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सिद्धार्थ, आप बताओगे मुझे. क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, बता दो. The laws of what? Laws of refraction of light. I don't remember. कुछ आइडिया? बिल्कुल भी नहीं. Like when it passes parallel to the center of. I don't remember exactly. I'm very bad at telling, so I need to study beforehand to see. Okay, no worries. Nitya, can you tell that? नृत्य, आपने क्या भेजा मुझे? मैम कल का होमवर्क थोड़ा सा
ओके, ये वाला ना ऐसे मत भेजा करो क्योंकि मुझे आई डोंट नो व्हाई बट ये ना खुलता नहीं है मेरी इस लैपटॉप में। सो Okay, इट्स ma'am. बेटर दैट इफ यू शेयर योर स्क्रीन दैट विल बी बेटर। ठीक है, अभी इसको हाँ, हम ma'am. बाय द एंड मतलब लास्ट में जब 10 मिनट्स रह जाएंगे ना तब डिस्कस करते हैं इसको। ओके नहीं, ये तो डायग्राम्स जो आपने बोले थे ना कि प्लेस करके आना, पोल कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है, वो ओके वाला ओके ओके डायग्राम है। हाँ, वो भी अभी डिस्कस कर देंगे। आप अपना चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मुझे बताओ फटाफट हाँ, मैम. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two media all lie in the same plane. ठीक है, प्रणव भी ठीक बोला इसने? Yes, ma'am. थोड़ा सा. थोड़ा सा। सिद्धार्थ, could you catch that? Yes. एंड प्रणवी सेकंड लॉ बताओ फटाफट। मुझे Ma'am, ऐसा लग रहा है कि कल भी प्रणवी ने सेकंड लॉ ही बताया था। ma'am, both the laws. Okay. नहीं, सेकंड लॉ बताओ। हाँ, the ratio of sine of angle of incidence to the angle of To the refraction sign of angle of to refraction yeah, is a constant known is as a constant known as refractive index for a given pair of media, where sin I by sin R is equal to 1 mu 2, which is okay, equal to mu 2 by mu 1. ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ। देखो, ये वाली जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने पढ़ी थी, दिस वाज कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आपको डिफाइन कैसे करनी है सारी चीजें। ठीक है, नंबर 1 बी दिस इज कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस सिंपल वो है जिसका कॉनकेव साइड बाहर की तरफ है, या फिर हमारी जो लाइट फॉल कर रही है वो कॉनकेव साइड पे कर रही है, केव साइड पे पड़ रही है बेसिकली। तब हम कह सकते हैं दैट यस दिस इज अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, क्लियर है? ये जो पॉइंट होता है ना बिल्कुल सेंटर में, I'll use a different color, a very cute one. Okay, ये जो पॉइंट होता है ना सेंटर में, दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल। ठीक है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस कॉल्ड? पोल. पोल। अब जिस सर्कल का या जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उसका जो सेंटर है, दैट सेंटर ऑफ दैट कंप्लीट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ये जो डिस्टेंस है, हम एक बार वापस बोलेंगे. सी की डेफिनेशन. C is the सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो पूरा स्फेरिकल बॉल है उसका जो सेंटर है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मुझे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने एक ना, आपने कॉस्को की बॉल देखी है? देखिए, खेला होगा क्रिकेट, है ना? तो कॉस्को की जो बॉल होती है वो अंदर से हॉलो नहीं होती, अंदर उसके अंदर कुछ होता है, लेदर होता है उसके अंदर, है ना हाँ, ma'am. गाइस? है ना? Yes, जी, ma'am. ऐसा नो। तो जब अगर उसी टाइप की हम लेदर की बॉल की बजाय एक ग्लास की बॉल ले लें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर उस बॉल को मैं साइड से कट कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाली बॉल ली है, ये बॉल ली है मैंने, इसको मैंने साइड से ये मेरी जो साइड बनी है अच्छी सी नहीं बनी, थोड़ी सी इरेज कर देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं अपनी बॉल। ये बॉल मैंने बनाई, बॉल मैंने ली, ग्लास की बॉल है, पूरा ग्लास का है ये। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से कट कर दूं, कट कर सकती हूँ, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या रह जाएगा? इतना सा पार्ट रह जाएगा। हाँ. ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना, दिस सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस लेंस का, वो यहाँ पे होगा, एंड दिस इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ द होल बॉल इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर? ओके. Yes, हाँ, मैम. ma'am. कोई इशू इसमें? No, ma'am. सिद्धार्थ, Not the question. नो इशू? ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस मींस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? Yes, ma'am. एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द इमेजिनरी एक्सिस। Yes, ma'am. Passing through the two COC.
ठीक है, and this distance is known as the aperture. बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस या फिर डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस. ठीक है मैम, मैम एक डाउट है मैम. हाँ मैम तो बोलो. ये पूरे सर्कल का डायमीटर नहीं लेंगे जो नहीं नहीं जितने नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इस लेंस का, ये जो ये हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर करी, सिर्फ इसका डायमीटर है. ओ, तो मतलब ओ सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. हाँ ठीक है. ठीक है मैम. ठीक है, हो जाएगा. कोई इसमें क्वेरी No, ma'am. गाइस? नो. No, ma'am. मैंने इतना बढ़िया पढ़ा है कि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, दिमाग में छप जानी चाहिए एक एक चीज. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके फाइन. एक सेकंड मैम, ये लिख लूं एक चीज. I hope you guys are taking down each and every, I mean, all the notes properly. Is that so? Yes, ma'am. Okay, fine. हम पोल की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो क्या कैसे लिखेंगे पोल की डेफिनेशन? पोल को आप लिख लो, लिखो. हाँ मैम. The central point of the spherical refracting surface is called a pole and is denoted by the letter capital P. The central point. The central point of the refracting surface. स्फेरिकल. Okay, ma'am. Surface. Done? Yes, ma'am. अच्छा, अब क्या सिमिलरली हम ये कर सकते हैं कि हम इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में यही कहानी कर लें? कर सकते हैं क्या? कैन बी? यस मैम. एक सेकंड का लिए एक डेफिनेशन लिखनी है और मैम. हाँ हाँ लिख लो, मैं तब तक अपनी फिगर बना लेती हूँ कॉन्वेक्स के लिए. मैं शैल आई टर्न द पेज? Yes. यस मैम. Which side will the center of curvature be if it is a convex refracting surface, ma'am? We are coming on to that, Siddharth. Okay. I'll give you a brief idea for the complete diagram. यहीं पे बना लेती हूँ इससे बेटर. Okay. ठीक है? You know, when I was in Delhi, we had a mall near my place which had its name as SRS. फुल फॉर्म? उसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं थी, फुल फॉर्म उसका नाम ही SRS था बस. कहाँ जाना है मूवी देखने? SRS. And throughout my 12th, I wrote this SRS as SRS. सरस. SRS, yes. Okay, चले नेक्स्ट फिगर करें? हाँ मैम. हाँ मैम कर ही लो, आप कौन सा रुकने वाले हो, है ना? ओके, ये है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये क्या है? ये कौन सी लाइन बना दी मैंने, बताना जरा. प्रिंसिपल एक्सिस. अरे वाह, ठीक है. ऊपर वाले डायग्राम से ही बता सकते हैं मैम. है ओके. ठीक है, इसका कलर ले लें कोई प्यारा सा ग्रीन ले लेते हैं. रेड और ग्रीन वैसे भी बड़ा किक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना? हाँ मैम. ओके ठीक है, तो ये क्या है? Pole. ये क्या है? पोल. अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सर्कल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना? यस. ओके, तो इसका जो सर्कल होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब ये सर्कल इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से तो होगा सर्कल, है ना? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा इनसाइड. ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है सिद्धार्थ? Okay. ओके, ये क्या है? वही अपनी हमारी घिसी पीटी कहानी, प्रिंसिपल एक्सिस. ये पोल हो गया, ये अपर्चर हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, Okay, ma'am. पक्का? कोई Yes. क्वेरी इसमें? No, ma'am. नो मैम. नेक्स्ट हेडिंग डालो.
अब मेरे को जो साइन कन्वेंशन आपने क्लास 10th में पढ़े थे ना, वो बता दो एक बार, आपने कैसे क्या पढ़े थे? ये सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन है, ये डिस्कशन करेंगे, इसके कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता ही है जनरल जो हमारे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी अगर हम, हाँ बोलो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब अगर यहाँ पे मैं लेंस ले लूं या फिर तो अपना मिरर ले लूं, तो फिर मिरर के इस साइड मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। नीचे की साइड जाऊंगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस और ऊपर की साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा ठीक है, इतना याद है मैम, उसके आगे नहीं नहीं ये तो पता कुछ आपने भी। मुझे ठीक बताया, लेकिन अगर मुझे कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो मैं नेगेटिव लूंगी पॉजिटिव लूंगी, वो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, एक सेकेंड है। आपको समझ आया प्रणवी वैसे आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ बताओ नित्या। ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये ऐसा लग रहा है कोई बच्चा स्कूटी पे बैठ गया, उसके बाल उड़ गए सारे। माउस से बना रहा हूँ फिर भी सही है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से आती है और बाय दिस डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? A little, ma'am. अ लिटिल बिट, ओके फाइन। Yeah. सो जो भी मैंने अभी व्हाटएवर जोक्स दे रहा है से राइट नाउ, तो आपको वो समझ आए? डिड यू गेट दोस जोक्स? No, ma'am. नो, यू शुड No. हैव आस्क्ड मी देन। I know Hindi a little as a second language. That's all. Nothing. Okay, so what do you guys speak in at home? I am Malayali, ma'am. We speak Malayalam. Okay, But, and what does wallam in there mean? ma'am, What does wallam in there mean? that's not a word, ma'am. Vallam is water. Wallam, I think wallam in there means where's water, I guess. That's Vallam Evada, ma'am. Oh, okay, my bad. Okay, so you take classes from me for physics and I'll take classes from you for Malayalam, right? The other way around. और अरे Did I not say that right? You I can said teach you physics and you can teach me Malayalam. you said the other way, ma'am. You said I teach physics and you teach Malayalam. ये नेगेटिव होगा। Okay, we can't recap what I said and what I meant to say. The meeting is recorded, ma'am. You can check it later. Oh my God. I had lots and lots of work to finish off, and I think that yes, this is something that I really need to, catch up after this class. Okay, ये क्या खतरनाक सा बनाया है? What is this? एक रे डायग्राम है, अभी जितना याद था उतनी मेमोरी में से बनाया है। एक पता है, This is not needed. We are just simply talking about sign conventions. Erase करो तो इसे. अभी यहाँ पे जो इमेज बनी है वो नेगेटिव बनी है, नेगेटिव क्योंकि नीचे नीचे बनी है, उल्टी बनी है, तो ये नेगेटिव इमेज बनी नीचे है। हम बनी लोग है, उल्टी बनी है, इसलिए नेगेटिव बनी है. What is this? ये तो ऐसा लग रहा है एपी ढिल्लों का कोई गाना चल रहा है. Okay, मैं बताती हूँ. ठीक है मैम। See, basically sign conventions are the rules for applying a particular sign while we are drawing some ray diagrams, or while we are considering certain values. What value should be negative, what value should be positive, depends on those sign conventions that we are using. Okay, now first sign convention is, for example, if this is a mirror or if this is a lens, we'll take it as a lens because अभी हम पूरे केस में हम refraction की बात करने वाले हैं और हम lenses की ही बात करने वाले हैं. This is the optical center. ठीक है? Okay, हम उसी, let's just talk about the figures that we are considering. For example, if we talk about concave spherical refracting surface, let's assume, ठीक है? If this is an object, okay, a ray of light will go from here to here. Fine? Fine. Okay. This is the pole. Okay. Now, if this is the point of center of curvature. Now, if I need to find out the distance between the pole and the center of curvature, the distance will be negative. Why? Because always if you have to find out a distance, it is always starting from the pole and then
traveling from here to here. This is the distance, right? Yes. This is the distance. But in this case, the ray is going in the opposite direction. Okay? Yes. Since the ray is going in the opposite direction, this distance will be taken as negative. Clear? Yes, ma'am. Now, suppose if this was not the case, if this was not the case, and again this is the pole, okay, this is the center of curvature, and I kept an object over here, okay, fine, fine. Fine. Any queries in this? No, ma'am. Okay, if this is the case, and if the ray of light, or maybe, or okay, let's keep the object over here only. The object is again kept over here, right? There's something happening and the image is forming over here. Let's say this is the image being formed. ऐसा कुछ होने नहीं वाला, कुछ अच्छा सा सुंदर सा बनेगा, but let's assume ऐसा कुछ हो रहा है. And if I need to find out the distance between the pole and the image, तो मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगी ऐसे, क्योंकि कोई भी distance अगर मुझे, if I have to measure any distance, I pick myself up from pole and head on to the distance, where I need to, what I need to measure. Fine. Yes. Is that clear? Siddharth, are you getting my point? Yes, ma'am. Okay, fine. मैम तो मतलब पोल से लेने का हमेशा, और है ना जहाँ पे इमेज बनी या फिर तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां से वहां तक डिस्टेंस लेने का. हाँ. पोल से चालू. Whichever distance you have to measure, you have to start from pole and move on to where you need to find out the distance. Okay? Okay. Now, since the ray of light is traveling in this direction, and I am also traveling from pole to this point, to this direction, then this distance will be taken as positive. Okay? Clear? Yes, ma'am. Yes, Clear, ma'am. ma'am. Any? तो मतलब बोलो. मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव होगा और सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव होगा, ऐसे. हाँ. Whenever both the ray and the distance traveled by you are in same direction, the distance will be positive. If the distance traveled by you is in the opposite direction to the traveling of ray, then it will be taken as negative. Okay. Understood. Understood, Pranavi? Yes. Yes, ma'am. Harsh, Nitya, any doubt? No. Okay, No. fine. ये थे बिल्कुल basic sign conventions. Okay. अगर कोई object is above the principal axis, तो इसका क्या, तो क्या होता है? What happens in this case? पॉजिटिव. और अगर नीचे की तरफ हो जाएगा तो, like here, नेगेटिव. again negative. Fine. Any queries in this? No, ma'am. मैम तो Okay. आप जो बोल रहे थे कुछ डिफरेंट होगा साइन कन्वेंशन, उससे वो क्या डिफरेंट है मैम यहाँ वो पे? डिफरेंस बस यही है कि हमने उस केस में प्रॉपर लेंसेज में कंसिडर किया है, और इस केस में हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि देखो मैंने आपको बताया था ना, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लेंस, ठीक है, हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने वी केप्ट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, वी स्टार्टेड आवर रे ऑफ लाइट, एंड अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और कहीं पे भी चली गई हमारी रे ऑफ लाइट. ठीक है. नाउ व्हाट वी डिड नॉट स्टडी वाज अबाउट दिस पार्ट. तो इसी को हम अभी स्टडी कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस. ठीक है. ठीक है मैम. ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. ओके, नेक्स्ट शेयरिंग डालो.
मैम ये हेडिंग है. हाँ जी. It's quite short, no? है ना? Let's draw a diagram also side by side. उसके बाद I'll dictate you. This is the rarer medium. Denser medium. Done this much? Please write down. Consider a convex spherical refracting surface. Consider a convex spherical refracting surface of refractive index N2 and let it be placed in a rarer medium of refractive index N1. मैम वापस बोलेंगे एक बार. Consider a convex spherical refracting surface of refractive index N2 and let it be placed in a rarer medium of refractive index N1. Done? Done, guys? Okay. Yes. Now, a point O, okay, a point object O lies in the rarer medium, at a distance U from the pole. देखो इसमें पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, फिर मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, आप लिख लेना. ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है, a point object, जो कि हम we have taken a point object which we have kept at point O. Siddharth, we are going bilingual. Does that work for you? Yes, ma'am. Okay, fine. In case if you don't understand anything in between, a sentence, a word, or anything, do interrupt me in between. Okay. Okay, ma'am. Okay. So what have we done is we have kept an object. We have kept a point object at point O, or we have taken a point object and kept it at point O, and it is at a distance U. It is at a distance U from the pole. Okay. Now, what is happening is a ray of light is going like this on the surface of the convex refracting surface, right? Yes. Fine. Now, what I do is I draw a normal. I'll draw a normal. हम यही तो काम करते हैं, जब भी कोई whenever there is some refraction or incident taking place, we draw a normal. So if I extend this line, okay, if I draw a normal, let's assume this is my normal. Uh-oh. ये हमारा नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, थोड़ा अच्छे से. ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रेट जा. Okay. Now, since it is going from rarer medium to denser medium, the ray of light will be reflected towards normal, refracted towards normal. Yes, ma'am. Right? It is going from rarer medium to denser medium. The light will be refracted towards the normal. Right? Any queries till now? No, ma'am. So हमारी light gets refracted. ठीक है? And the image is formed
here as I. Okay. Now, one more thing I add in here, that is I draw a normal from this point on the principal axis. This is A, this is N. Okay. Fine. Okay, ma'am. Now, I consider this angle to be alpha. Always. Alpha is the angle between the principal axis and the incident ray. Okay. This angle to be beta, where beta is the angle between the refracted ray and the principal axis. Always. And this angle to be gamma, where gamma is the angle between the normal and the principal axis. Always. Okay. Alpha, beta, gamma are the three angles that I have considered. Okay. Fine. Yes, ma'am. Now, whatever story I just told you here, we are going to pen it down. Okay. What was the last line that we wrote? मैम एक सेकंड ये ड्रॉ कर लूं पहले. हाँ, please quickly. Draw this quickly. Ma'am. Ma'am, normal is this red line, right, ma'am? Yes. Then here N is there with the AN is the brown. normal that I have drawn from A, from point A. Oh, okay, ma'am. Normal to the principal axis. Okay. The normal, this normal, N. Okay, if it is N1, let it be N2. If this is the normal, N2 is the normal on the surface of the on the this convex surface. Okay. Okay, ma'am. Clear, ma'am. मैम एक बार पिछला पेज करेंगे. Done. Done. Start. Yes, ma'am. Done. Okay, fine. Okay, let's head on to the next concept. What was the last line that you wrote? A point object O in the rarer medium at a distance U from the pole. Of the convex, okay, from the pole. A ray of light from O is incident on the convex surface at A. Ray of light is incident on the convex refracting surface at point A. Let C be the center of curvature. Let C be the center of curvature. Oh. Then N2C. Then N2C is the normal. Then N2C is the normal to the convex surface. Normal To the surface, to the convex surface.
Next line. After refraction at A, the ray enters the denser medium and bends towards the normal. After refraction at A, the ray enters the denser medium and bends towards the normal. This is a big derivation, so I am being a bit fast. Okay, so please mind that a little. We need to be really quick with these derivations. Okay. Ray enters the denser medium. And bends towards the normal. This question can come in multiple forms. Okay. In next class, I'll tell you how this derivation can come in your exam. Okay. We will just do a brief of this derivation. I don't think that we'll be able to complete this derivation in today's class, but in next class for sure we have to finish this derivation and one more derivation likewise. Though both the derivations are same. Okay. And my point will be next class that I need to tell you how this question, if it comes in the exams, how is it going to affect you? Okay. 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 Write down. The refracted ray meets the principal axis at I. The refracted ray meets the principal axis at I and forms a real image of the object at O. And forms the real image of the object at O. Meets the principal axis at I at I. Next, देखो. The distance between the pole and the image I. The distance between the pole and image I is V. The distance between the pole and the image I is V. Okay. And the distance between the pole and the center of curvature is R. I have done these modifications in the diagram. Please note them too. Okay. Okay. Okay, next heading under this topic should be, मैं इसको ना थोड़ा सा basic बता रही हूँ, ये derivation पूरी हो नहीं पाएगी, तो I'm not starting this derivation in this class, but we will be doing this derivation in the next class. देखो उसमें 3 steps होने वाले हैं, ठीक है? Step number 1, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा और मतलब लिख भी लोगे साइड पे तो भी ठीक है. It's up to you. Okay. Number 1 will be determination. Step number 1 will be determination. Of I and R. ठीक है, I और R की वैल्यू निकालेंगे हम. Number 2 will be using Snell's law. We'll be modifying the equation. The equation. And number 3 will be using sign conventions. We will find out the equation of equation
Are you guys writing this down? Are you guys writing this down? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am, for Nitya. Nitya, I'm kya? saving it, ma'am. Saving it where? PC, ma'am. Find out the equation for the real image. In case of convex spherical refracting surface, when object is kept in rarer medium. Okay, what we will be doing is we will be simply using the alpha, beta, gamma, first of all angles, finding out the incident ray, finding out more about the equations of incident ray and the refracted ray, and then we will be using Snell's law to modify those equations using certain mathematical laws, and then simply using sign conventions, we will rearrange the equations and find out that. Okay? Clear है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये आगे होने नहीं वाली. इट्स अ बिग डेरिवेशन. आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो होमवर्क for you will be to revise the concept of the previous class and to revise the sign convention. Okay? Okay. Clear? Any query from today's class? No, ma'am. Are you sure, Nitya? हम नेक्स्ट पेज कर देंगे एक बार, मैम. Okay. क्यों? नोट नहीं किया? हो गया. हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा नितिन, स्क्रीनशॉट में आप हम सबकी शक्लें भी लेते हो क्या? नहीं मैम, ओनली द व्हाइट बोर्ड. ओके ओके फाइन. लेना भी नहीं मत. वो जूम का ही स्क्रीनशॉट है ना, जूम के व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट. ओके ओके ठीक है. मैंने कहा आप ले रहे हो हमारा स्क्रीनशॉट तो बता दो, फिर हम स्माइल करके बैठेंगे. देखो क्या करने because का मैम. because there will be times that I will be speaking something like this and फिर your screenshot will take my picture as like this, so that looks a little weird, right? मैम तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है ना मैम. Recording is okay because I am in constant motion, right? But in the case of screenshots, I'm not in motion, and that might look a little weird, no? Yeah, ma'am. Right? Okay, so let's stop it for the day and let's meet in the next class. Okay? Yes. Okay then. See you guys and enjoy your weekend. Happy weekend, and Thank do you. revise the concepts that we have done in this week. Okay? Ma'am, tomorrow class is there, ma'am. मैम तो होमवर्क थोड़ा ज्यादा नहीं मिलेगा अभी? वीकेंड 2 दिन क्या करेंगे? 2 दिन आप ये करोगे कि पूरा जो concept है वो revise करो. पूरे का पूरा ठीक है. हाँ, पूरे का पूरा. So tomorrow no class, ma'am. Yeah. Pranvi, I need to talk to you, I guess. Nitya and Siddharth, you can leave. Thank you. Okay, thank you. Bye. Pranavi, I think Upasna can tell you that. I think we will have a class because Saturdays are scheduled for your tests, right? Hmm. है ना? Yes, ma'am. तो I think Don't know, टेस्ट ma'am. अगर टेस्ट होगा तो मैं जो मैंने कराया है ना अभी तक ये सारे का टेस्ट होगा. Okay, ma'am. ठीक है? And timing I will let you know. We might have have the class at different timings. Okay, ma'am. ठीक है? I'll let you know that. Fine? Okay. Maybe during the day you are free, right? Yes, ma'am. I'm free, ma'am. Okay, so I'll let you know. एक बार have a word with Upasna ma'am once. Okay, Okay. maybe after the class. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank Now, you. should I talk to her, ma'am? Please. Okay. You may leave the meeting, please. Thank Yes, you. ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am.